evening, everyone. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. The desire for revolution is in our hearts. Let's see how strong the enemy is. At the stroke of midnight hour, when the world sleeps, India will awaken to life and freedom. These are the famous words by Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, on the 14th of August, 1947. 75 years down the lane, India has come a long way, and it is with deep respect for our martyrs who laid down their lives for our freedom, trust in our soldiers at the border, pride in our souls for those who are driving the nation towards excellence, leadership, and recognition in the world today. We reminisce the paths we have traveled with utmost glory. Today, not only are we celebrating the 75th Independence Day, but also the Quit India Day, also known as the August Day or the August Kranti, which played a significant role in India's struggle for freedom from the British rule. Samanvayam is privileged and honored to participate in the Embassy of India patronized ICC's Azadi ka Amrit Mahotsav, commemorating 75th year of well-earned independence. Namaste, Vanakkam, Sat Shri Akal, good evening, and a warm welcome to Samanvayam's cultural fiesta, a well-choreographed program that promises to thrill you into raptures. To invoke the blessings of the Almighty, we begin the program with the prayer and the traditional lighting of the lamp. To do the honors, I may request Samanvayam President Ravindra Prasad Ji to escort our Honorable Chief Guest, Mr. Kuljit Singh Arora, Second Secretary, Information, Education and Culture, Embassy of India, Doha, Qatar, Mr. Babu Rajan, President, ICC, Mr. A.P. Manikanthan, Past President, ICC, Mr. K.S. Prasad, Advisory Council Chairman, ICC, and other dignitaries. As we light the lamp, let me call Agrata and Dhwani for the prayer. ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति जन नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते. Thank you, everyone. To open the cultural fiesta with a bang, let's start with the traditional rhythmic beats of the percussion, most popularly known as Chendamelam. Ladies and gentlemen, please help me welcome with a big round of applause, Melam Doha presents Keli on the stage. We have Sri Mahesh Kumar on Chenda,
Sri Gobinath Menon on Maddalam, Sri Mahesh Tirumeni on Valam Tala, and Sri Vinod Nair on Talam.
Thank you so much for getting us into the feet-tapping beats. Hope you all enjoyed the Chendamelam. Can we have another round of applause for them, please? Now, let me welcome Nihal Raval to deliver a speech on Independence Day. Namaste, I am Nihal Raval, and today we all are here to celebrate our 75th Independence Day, which is also known as Azadi ka Amrit Mahotsav. Before starting my speech, let me ask you all a question. Why we celebrate 15th August as Independence Day? Anyone? Yes, we celebrate this day as Independence Day because we got freedom from Britishers after struggle of 200 plus years and sacrifice of our freedom fighters. The first struggle of our independence started from 1757, which is known as Battle of Plassey, then Battle of Buxar, and in both the battles British won, and then they started administrating the territories and capturing it indirectly by introducing new policies. Example, doctrine of lapse, subsidiary alliance, and paramountcy. Jhansi was one of the kingdom who got annexed by the policy of doctrine of lapse in 1854. But Rani Lakshmibai fought for the freedom of Jhansi, but she died while fighting for it. The policy of doctrine of lapse tells if a king doesn't have any successor, then the kingdom will go under the administration of British government. Then on 8th April 1857, a young soldier named Mangal Pandey was hanged to death because he killed his officers in Barakpur. And some days later, the sepoy of his regiment refused to do army drills using new cartridges because they were made from fat of cows and pigs. And this was against the religion of Indians. I am proud to say that our soldiers in the British regiment denied to use that cartridges, and they respected our religions and they didn't become money blind. Then on 1891, Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal and Lala Lajpat Rai created new ways to get freedom from Britishers. They believed on self-reliance and constructive work. Tilak raised a slogan, "Freedom is my birthright and I shall have it." Then on 8th April 1929, Bhagat Singh, Azad and Rajguru shot an officer who was involved in lathi charge that caused the death of Lala Lajpat Rai. And then Bhagat Singh and B.K. Datta threw a bomb in Legislative Assembly to make the deaf hear. Inqilab Zindabad, Inqilab Zindabad, Inqilab Zindabad. Then on January 1941, Bose secretly left his home and went to Singapore via Germany and created Azad Hind Fauj, which is also known as Indian National Army. This Fauj main aim was to make India freedom and till 1944. But unsuccessfully, Bose died and Azad Hind Fauj also got destroyed. But this all came into a huge impact on Britishers and they left our country. Before ending my speech, I would like to tell few words. We didn't got this freedom for free. It has taken sacrifice of lot of families, lot of freedom fighters and many more. Some freedom fighters are sung, some are unsung, but if we have to remember them on this day, if we don't remember them on this day and we don't learn the lessons from their life, then there is no use to celebrate this day. People say, my role model is James Bond, my role model is Iron Man, I want to become like Thor. But I will say, I want to become like Bhagat Singh, I want to become like Sardar Vallabhbhai Patel. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, Nihal, for that wonderful speech. Friends, let's welcome Samanvayam President, Shri Ravindra Prasad ji, to welcome the gathering.
Namaste. Namaskaram. Vanakkam. A warm good evening to all, one and all gathered in this prestigious Ashoka Hall to celebrate the India's 75th Independence Day celebrations. Azadi ka Amrit Mahotsav. As we all know, our Bharat is a country with rich heritage and culture. We are the people who gave the value of zero and the value of yoga to the world. Such a country's Independence Day celebration is a proud moment for every one of us. In the whole one universe, to inhale the oxygen, we have to grow more trees. Like that, to inhale the oxygen of this independence, we have to conduct programs like this. That is what ICC and Embassy of India is giving a major platform to us. Thank you. And coincidentally, today is the Quit India Movement Day, and Samanvayam has the opportunity to celebrate this 75th Independence Day celebration with the blessings of ICC and Embassy of India. So now, I extend my pleasant welcome to our chief guest, Mr. Second Secretary, Kunal Singh Arora, Kuljit Singh Arora, Second Secretary, Information, Culture and Education, and our vibrant leader, Mr. P.N. Baburajan, President ICC, and ever smiling, our AP Manigandan Ji, ex-President ICC, and a supportive Mr. K.S. Prasad, Chairman, ICC Advisory Council, and all other dignitaries, all other AO presidents, and our well-wishers, Mr. Narayanan, Oriental Trading Corporation, and Mr. Gopalji, and all the AO's representatives, and Samanvayam families, and all the colorful gathering in this August prestigious ICC hall. And also I welcome the participants, parents, and the choreographers, and all other people who is helping us to do this, to stage this performance. And also for all the management committee members of ICC who are present here for their valuable support. Finally, I request all of you to give a very good support to our performers. So who was in the vacation time. Actually, all our A team, B team and all in vacation. And we are deployed with the available resources. And then that is the litmus test given by our two stalwarts for us, for all the AOs. That is what we are doing. So I request kindly to give our laugh with loudly and claps with powerfully. So both are good exercise also. Thank you all. Nandri. Jai Hind. Thank you, Sri Ravindra Prasad ji, for that warm welcome. ICC, which is organizing this fortnight-long series of events to commemorate India's Azadi ka Amrit Mahotsav, has always supported Samanvayam in all its social, cultural, and educational activities. And it's my pleasure to invite the President of ICC, Sri P.N. Baburajan, to address the gathering here. A big round of applause as we welcome Sri Baburajan ji to the dais, please. A warm good evening, dear friends. Today's chief guest, Sri Kuljit Singh, Second Secretary, Embassy of India, Samanvayam President, other leaders, dignitaries. As Prasadji mentioned, ICC celebrating 75th anniversary of India independence
in a different manner. Even we can manage this celebration also like a one-day program. But as our Prime Minister, Honorable Narendra Modi ji mentioned in last year, ICC also started the celebration from March 26, 2021. Only few weeks it was freezed because of the COVID restrictions. Then after every day, every week, there was event in different way. Not only with the cultural program, sometimes for tree plantation, otherwise beach cleaning. Many events we connected with the Azadi Amrit Mahotsav festival. That means Indian community of the Qatar, they taken this subject wholeheartedly and celebrated in many ways. Even you see this Keli, which presented by Gobi Nath and team. It is a new to us. Okay, normally they are doing a Melam program just to, to remember our nostalgic feelings. But now, this year onwards, like 1st of August only I have seen the Keli they are presenting with the Madala man, Chanda and all. That is our something new experience. And today is 18th year anniversary of Quit India movement. Like Mahatma Gandhi mentioned, okay, do it or die. That means for our country, whatever we can do, that we have to do. Instead of depending Britishers or somebody, it is your duty to do for your nation. So that is taking as a very serious way ICC plan and 90 days event. Even embassy was asking few celebration connected with Azadi Amrit Mahotsav and the India Independence Day of 75th anniversary. We thought, no, we will do a 2 weeks event. So with the help of vibrant community, vibrant companies like Naranji is sitting, I know every event connected with Azadika Amrit also, we got a very good monetary support from his company. So such a vibrant companies, company management and our Indian community here, that's the only reason we could achieve this much. Once again, thank you for accepting ICC request Samanvayam Doha for doing today's event, and thanks to all. Thank you, sir, for your kind words. The Embassy of India has been the patron of the ICC ever since it was formed, and today we have a very special guest from the embassy in our midst. He is the Second Secretary, Information, Education and Culture, Embassy of India, Doha, Qatar. Audience, please put your hands together to welcome Shri Kuljit Singh Arora, Second Secretary of Embassy of India, to felicitate this event. So please. My dear Ravindra Prasad Saab, President Samanvayam, Babuji, our ICC President, and all distinguished guests, Namaskar to all of you. It's really a privilege to be present here today and to attend this cultural fiesta on this auspicious occasion of celebrations of 75th anniversary of India's independence, held by our prestigious Indian community affiliate organization, Samanvayam. Today's event is definitely going to enthrall all of us, as also is going to enliven our patriotic feelings for our beloved nation, which will be 75 years old this 15th August 2022. It's the occasion when we reiterate that the ethos of India's freedom struggle form the foundation of modern India. Our visionary leaders at that time, before and after the independence, brought together a diversity of world views to forge a common national spirit.
They were committed to the cause of liberating our country from oppressive foreign rule and securing the future of our children. Beginning from mutiny of 1857 by legendary Mangal Pandey to the long journey of Indian independence movement led the country become an independent nation on 15th August 1947. We really need to cherish this prestigious moment. And also, as you know, today is a very special day also because the Quit India movement was launched by Mahatma Gandhi ji as told by Babuji and others, already informed by them. So this particular movement was the last nail in the coffin of Britishers. After that, the freedom struggle was at its last stage and finally we got independence after around 5 years. Now let's talk about our organization Samanvayam. Since its formation, Samanvayam has endeared itself to the Indian diaspora in Qatar by highlighting India's contribution to the world of education, science and technology, art and culture, social causes and much more. And now we have other programs also, so let me conclude and convey my best wishes to the whole team involved in making today's event a wonderful one. Jai Hind. Thank you so much, Shri Kuljit Singh Arora, for your encouraging words. I request you to come back to the stage as I welcome ICC President, Mr. Babarajan, Samanvayam President, Mr. Ravindra Prasad, past ICC President and Program Committee Chairman, Azadi ka Amrit Mahotsav, Mr. A.P. Manikantan, ICC Advisory Council Chairman, Mr. K.S. Prasad, Samanvayam Coordinator, Mr. Sri Kumar, to kindly join our Chief Guest on the stage. I request all of you to please keep silence. Now, let me welcome our guest of honor. He was the past president of Samanvayam. He was born in 1946, before India got its independence. His mother was his guru who helped him face all the hardships of life with knowledge, strength, and courage. After coming to Qatar in 1979, he has worked in many different areas and contributed to the society through a lot of social and charitable organizations, which includes sponsoring the education of children. He has also received the residence permit in Qatar. Can we have a round of applause for Shri Gopalakrishnan Acharatha? Gopalji. I request Arora ji to honor Gopalji with the Ponnada. Gopalji, if you could say a few words, please. No? It's okay. Thank you, all the dignitaries. I request you to go back to your seats. You have to mention again, because he is the only one person born 1 year before the Independence. That message has to go. Yeah. So I'd like to repeat again. He was born in 1946 before India got its independence. Thank you, everyone.
No event can be complete without an expression of gratitude. And to propose the vote of thanks, I have the pleasure of inviting Samanvayam General Secretary, Sri Sajeev. Friends, please a big round of applause for Sri Sajeev. Good evening. Namaste. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion of Azadi ka Amrit Mahotsav. Let me first of all start by giving thanks to the Almighty God to make today's program a resounding success. First and foremost, I thank our chief guest, Shri Kuljit Singh Arora, Second Secretary, Information, Culture and Education, Indian Embassy, who despite of his busy schedule has found time to grace this occasion. Thank you. I also express my heartfelt thanks to Shri P.N. Babarajanji, President of ICC, for his valuable presence over here, and all the management committee of ICC for their support to conduct this event. We are grateful to Mr. A.P. Manigandan, ex-president of ICC and program committee chairman, for his encouragement and kindness. Special thanks to Mr. K.S. Prasad, chairman ICC Advisory Council, for his presence and support. I thank all the dignitaries, AO representatives and others who are present here for your valuable support. I sincerely thank all our Samanvayam families, senior members, ExCom team, all the participants of today's program and their parents, choreographers, volunteers for their cooperation to make this 75th Independence Day celebration a grand event. Sincere thanks to our senior member Gopalji, who had accepted our felicitation and graced this event. I extend my heartfelt gratitude to our sponsor of today's program, GETP and AYT Group. A word of appreciation to the anchor Ms. Malavika Prasad for conducting this event, and to the light and sound team, including photographers, for their cooperation. Special thanks to Melam Doha team for the wonderful performance today. Once again, I thank you all for your presence and support. Thank you. Dhanyavad. Jai Hind. Thank you so much, Sri Sajeev. Samanvayam Cultural Fiesta is a carefully knit saga of patriotic dances, music, and songs choreographed to perfection. Ladies and gentlemen, sit back, relax, and enjoy the colorful musical that will be presented for your delight and joy. First, let's have a dance for the song Vande Mataram, choreographed by Soumya Vinod. Participants, Diana Sarah Joseph, Devananda Sajimon, Evelyn John. Please put your hands together for them.
वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलाम् सस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरं मातरं वन्दे मातरं मातरं दों दननन दों दननन दों Thank you so much for that beautiful and colorful performance that took me back to my country. Next, let us enjoy a Malayalam patriotic song by Anjana Anoop. Ladies and gentlemen, a round of applause for her, please.
तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे, जोर से मुझको गले लगा ले, मुझको फिर वो प्यार दे। तू ही जिंदगी है, तू ही मेरी मोहब्बत है, तेरे ही पैरों में जन्नत है, तू ही दिल तू जान। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, ओ माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। जय हिंद। Thank you for that beautiful performance. Next, let's enjoy a Tamil dance on the concept Veedu nalla irundha naadu nalla irukum. Meaning, if the house is good, then the nation will be good. By Sahana Nagarajan. Please put your hands together for her. கடவுளே, இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு இந்த ஆங்கிலேயர்களுக்கு அடிமையாவே இருக்கிறது? இதுக்கு நீதான் ஒரு நல்ல வழி காட்டணும். நமக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சிருச்சா? அப்பா, இண்டிபெண்டன்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ். நிஜமாவா? அப்பா, ரொம்ப நன்றி கடவுளே. கொண்டாட்டத்துக்கு பாட்டுலனா எப்படி? போயாச்சு சுத்தமான ஊராச்சு கண்டம்மா, நட்ட நாடு ராவாச்சு, நட்ட வேத பூவாச்சு பொன்னம்மா. பிடியும் வரையில் போராடினோ, புதிரம் மதியாய் நீராடினோ. வெக்கலெல்லாம் வாழாச்சு, துக்கமெல்லாம் கூழாச்சு கண்ணம்மா கண்ணம்மா. நம்ம வாசல் தேடி சாரல் வரும், மெதுவானம் தூவும் தூரல் வரும். வாழ்வில் சூழ்ந்த சோக
25 years later. என்னப்பா சோகமா இருக்க? என்னத்த சொல்ல, வீட்ல ஒரே சண்டை. வெளியில வந்தா நாட்டுல அதை விட பயங்கரமா பிரச்சனையா இருக்கு. என்ன பண்றதுனே தெரியல. நாட்டுக்கு ஏதாவது நல்லது பண்ணோன்னு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு. எங்க என்ன பண்றது ஏது பண்றது ஒண்ணுமே புரியல. கவலைப்படாதீங்க. இஃப் there is a will, there is a wayன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க மட்டும் இல்ல, உலகத்துல இருக்கிற ஒவ்வொரு இந்தியனும் தன் தேசத்துக்காக இந்த விஷயத்த செய்யலாம். ஆமாங்க, வீடு நல்லா இருந்தா நாடு நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. வீட்டை எப்படி நல்லா வச்சுக்கிறதுன்னு கேட்குறீங்களா? உறவுகளை ஒன்னா ஒத்துமையா ஒரே வீட்டில் சந்தோஷமா மதிச்சு வாழ்ந்தாலே போதும், நாடு நிச்சயமா முன்னேறும். கேட்கவே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஆனா எப்படி? வாங்க சொல்றேன். அம்மா, நான் பார்த்த முதல் முகம் நீ, நான் கேட்ட முதல் குரல் நீ, நான் வாழ்ந்த முதல் அறை நீ. நான் பார்த்த முதல் முகம் நீ, நான் கேட்ட முதல் குரல் நீ, நான் முகர்ந்த முதல் மலரும் நீயே. நான் வாழ்ந்த முதல் அறை நீ, நான் வரைந்த முதல் படம் நீ, நான் விரும்பிய முதல் பெண்ணும் நீயே. அப்பா, நான் பிறந்தது முதல் இறக்கும் வரை நான் பார்த்த முதல் ஹீரோ, என்னை கற்பித்த முதல் ஆசிரியர், என்ன கேட்டாலும் மறுக்காமல் கொடுக்கும் முதல் கை. கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே என் மீது சாயவா, புண்ணான நெஞ்சை பொன்னான கையால் பூ போல நீவவா. நான் காத்து நின்றேன் காலங்கள் தோறும் என் ஏக்கம் தீருமா. நான் பார்த்து நின்றேன் பொன்வானம் எங்கும் என் மின்னல் தோன்றுமா. தண்ணீராய் மேகம் தூரும் கண்ணீர் சேரும் கற்கண்டாய் மாறுமா. கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே. நம்ம எல்லா உறவுகளையும் பகிர வரும் ஒரு உயிர், வழித்துணையாய் வாழ்க்கை முழுவதும். மனசோ இப்போ தண்ணி அடிக்குது, மாமன் அடிக்கு முத்தரட்டம் டம். சிரிப்போ இல்ல மின்னல் அடிக்குது, ஆசை பொண்ணுக்கு அச்சரட்டம் டம். புதுசா ஒரு வெட்கம் முளைக்குது, குடிச்சா ஒரு வெப்பம் ஒழிக்குது. வேட்டி ஒண்ணு சேலையத்தான் கட்டிக்கிட்டு சிக்கி தவிக்குது. மாலை டம் டம் மஞ்சள் டம் டம், மாத்து அடிக்கு மங்கள டம் டம். ஓல டம் டம் ஒதுக்கு டம் டம், ஓங்கி தட்டிக்கும் முத்திக டம் டம். மாலை டம் டம் மஞ்சள் டம் டம், மாத்து அடிக்கு மங்கள டம் டம். ஓல டம் டம் ஒதுக்கு டம் டம், ஓங்கி தட்டிக்கும் முத்திக டம் டம். எவ்வளவுதான் உறவு இருந்தாலும் தாத்தா பாட்டிக்கு ஈடாகுமா? அம்மான்றது பாசம், அப்பான்றது அறிவு, தாத்தா பாட்டி ஒரு அனுபவம். தாத்தா பாட்டி வசிக்கும் வீடு கோயிலாட்டம் இருக்கும். அவங்க ஊட்டி வளர்க்கும் அன்பு பாசம் தேனை விடவும் இனிக்கும். பாட்டம் பாட்டி உறவிருந்தா புல்லும் மலைய வளைக்கும். அவங்க போட்டு வச்ச பாசவித சூரியனில் முளைக்கும். அனுபவத்தில் மூத்தவங்கள அரவணைக்க வேணும். ஏழு பொறப்பு எடுத்தாலும் தாத்தா பாட்டி வேணும். அவங்க அன்பு பாசம் வேணும். தாத்தா பாட்டி வசிக்கும் வீடு கோயிலாட்டம் இருக்கும். எல்லா உறவுகளையும் தந்த தரப்போகும் கடவுளுக்கு நன்றி. உறவுகளை நாம் கொண்டாடினால்
அவர் வாழ்க்கையில் ஆயிரம் ஆயிரம் மாற்றங்கள் அந்த நினைவுகள் நெஞ்சினில் திரும்பிட திரும்பிட ஏக்கங்கள் அது ஒரு அழகிய நிலா காலம் கனவினில் தினம் தினம் உலா போகும் அது ஒரு அழகிய நிலா காலம் கனவினில் தினம் தினம் உலா போகும் நிலவுகள் சேர்ந்து பூமியில் வாழ்ந்ததே அது ஒரு பொற்காலம் வாங்க எல்லாரும் ஒன்னா ஒத்துமையா இருக்கலாம். After 25 years, India is a well-developed nation now. Everyone's house is filled with love and care, and this is the reason of a successful developed India. Happy 100th year. நன்றி, வணக்கம். Thank you, Sahana, for that spectacular performance. Next, our drizzling stars are going to submit their tribute to all those who fought for our independence and finally our nation. With their emotional, cute and energetic performance, let's welcome Ashika Menon, Kritika Pradeep, Karthik Manoj, Ayush Satishan, Prarthana Satishan, Kirtana Satishan on the stage, please. मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम दिन ये घर सुना सुना है मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही माँ तुझे सलाम तुझे सलाम तुझे सलाम अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं टिंग 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 थोड़ी सी दूर मेरी धरती की मेरे वतन की थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त बन की थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 जिनमें हो जुनून वो बंदे लाल लहू की ये सब तू मिला मिला ले फिर
मेरे रंग तो खिला खिला ले और मोहित रंग दे बसंती यारा मोहित रंग दे बसंती झुके तेरे आगे सर तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया झुके तेरे आगे सर तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया भारत हमको जान से प्यारा है सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है भारत हमको जान से प्यारा है सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती देश मेरे मेरी जान है तू देश मेरे मेरी जान है तू देश मेरे मेरी शान है तू देश मेरे मेरी शान है तू हे वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक पा जाएंगे भूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम बेटे अपने सरों पे चढ़ा जाएंगे हे वतन मैं वतन Thank you for that amazing act. Next, let's have a Hindi solo dance by Prisha Praveen. Please put your hands together for her. सारा जहां देख लिया कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही माँ तुझे सलाम माँ तुझे सलाम अम्मा तुझे सलाम वंदे मातरम वंदे मातरम वतन वतन मेरे आबाद रहे तू ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू ऐ वतन मेरे वतन ऐ वतन मेरे वतन तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से तू ही मेरी
Thank you so much. Next, let's enjoy a group dance composed on soldiers and their bravery. Significance keeping peace in country. Salute to the soldiers, especially the Indian National Army. Azad Hind Fauj, Netaji Subhash Chandra Bose, a famous dance from the latest Kannada movie, communicating salutes forgotten soldiers of freedom fight. ರಣ 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 ಕಲಿಯೋ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯೇನೆ ಇವ ಕಳೆಯೋ ಧಗ 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 ಉರಿಯೋ ರಣ ಕಲಿಯೋ ಇಡೀ ದೇಶವೇನೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯೋ ಧಡ 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 ನಡೆಯೋ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆಂದು ನಾವು ಋಣಿಯೋ ಆ ಸಿಡಿಲು ಮಳೆಯೇ ಬಂದರು ಸಾಗರವೇ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದರು ಎದುರಾಳಿ ಎದುರಿಗೆ ನಿಲ್ತರು ನೀ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ದೇಶನ ಕಾಯುವೆ ಜನಗಳ ಮನ ಎದೆಯಲಿದೆ ಓಹೋ ಬಲಿದಾನ ಕುನು ನೀನು ರೆಡಿಯೋ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ನೆನೆಯುತ್ತಿದೆ ಓಹೋ ಎಂದು ನಿಂಗೆ ಜಯ ಹೋ ಗುಂಡಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ನಡಿಗೆ ದೇಶ ಕಾಯುವೆ ನೀ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ನಡುಕ ಆ ವೈರಿ ಬಡೆಗೆ ನಿನ್ಗೆದೆ ಎಲ್ಲಿ ಭಯವಿಲ್ಲ ರಣರೋಚಕ ನಿನ್ನ ನೆರಳೆ ಧೈರ್ಯ ನಮಗೆ ಕೇಳೋ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಮಗೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿದೇಳುವ ಸೈನಿಕ ಸೋಲ್ಜರ್ ನೀ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಡೇಂಜರ್ ಸಲಾಮ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ನೀ ದೇಶಕ್ಕೇನೆ ಪವರ್ ಸಲಾಮ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹುದು ಫೈರ್ ಸಲಾಮ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಎಲ್ದೆಂದು ನೀನ ಸೇವ್ಯರ್ इस मिट्टी की जान हो ओ वीर सेना भारत माँ की शान हो सलाम सोल्जर Thank you so much. The choreographer was Sanjana, DPS school dance teacher and Kannada Sung EXCOM member. And the performers were Surya Bhatt, Siddharth Shanmukh, Arnav and Shaurya Bhatt. Next, let's enjoy a beautiful Malayalam song by Shri Priyanka Sajeesh. She was the Palakkad district Kalathilakam. Let's welcome her on stage for the song and a mono act. Namaste. यदा यदा हि धर्मस्य ग्ला
स्वधर्मस्य तथात्मानं सृजाम्यहम् सानिनि सनिधापमधपमगरि निरिरिस ഒരു മയിലണിയണി ചേരുക നമ്മൾ ഒരു മതൻ ഗീതം പാടിടാം ഒരു മയിലണിയണി ചേരുക നമ്മൾ ഒരു മതൻ ഗീതം പാടിടാം ഒരു ശ്രുതിയായി ഒരു ലയമായി ഒരു മധുരസ്വര രാഗവിലോലം ഒരു ജനഗതിയുടെ മധുരിത ഭാവം ഒരു മയിലണിയണി ചേരുക നമ്മൾ ഒരു മതൻ ഗീതം പാടിടാം ഒരു മതൻ ഗീതം പാടിടാം ഭാരത് മാതാ മേരി മാതാ മേരി മാതാ सबकी माता भारत माता मेरी माता तेरी माता सबकी माता हिंदू और मुस्लिम की माता हिंदू और मुस्लिम की माता गहरा इसका सबसे नाता आवो गाए आवो गाए जसोदा हरिपाल ने झुलावे जसोदा हरिपाल ने झुलावे हलरावे दुलरावे मलहावे जोई सोई कछुगावे जोई सोई कछुगावे मेरे लाल को आओ नंदरिया काहनानी सुलावे मेरे लाल को आओ नंदरिया काहनानी सुलावे हलरावे दुलरावे मलहावे जोई सोई कछुगावे जोई सोई कछुगावे പഞ്ചശീലത്തിൻ പാഞ്ചജന്യം നെഞ്ചിടിപ്പിലുണർന്നു പഞ്ചശീലത്തിൻ പാഞ്ചജന്യം നെഞ്ചിടിപ്പിലുണർന്നു ദ്രാവിഡ ഉത്കല സംസ്കാരത്തിൻ വീരഗാഥകർ നമ്മൾ ദ്രാവിഡ ഉത്കല സംസ്കാരത്തിൻ വീരഗാഥകർ നമ്മൾ അജയ ശക്തികൾ 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 നമ്മൾ വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം. അമ്മയുടെ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തിയ ഇടശ്ശേരിയുടെ പൂതപ്പാട്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ മലയാളികൾക്കും അറിയാവുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു അമ്മയുടെയും ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെയും ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ത്യാഗത്തിൻ്റെയും ഒരു രംഗം ഞാനിവിടെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്.
2 കണ്ണുകൾ അതെനിക്ക് താ. എന്നാ ഞാൻ നടക്കുന്നതിന്റെ ഉള്ളിയെ തരാം. എന്റെ മോനേക്കാളും വലുതായി എനിക്കൊന്നുമില്ല. എന്റെ കണ്ണുകൾ ആ കത്തി ഇങ്ങ് താ. എന്റെ കണ്ണുകൾ വേണല്ലേ? ഞാനിപ്പോ തരാം. ഇതാ എന്റെ കണ്ണുകൾ. മോനെ, അമ്മയുടെ പൊന്നു മോനെ, അമ്മയുടെ മോനെ. അല്ല, ഇതെന്റെ മോനല്ല, ഇതെന്റെ മോനല്ല. കണ്ണ് കാണാത്ത എന്നെ പറ്റിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചില്ലേ? പക്ഷേ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച അമ്മയ്ക്ക് അറിയൂ. എനിക്കറിയാം നീ എന്നെ പറ്റിച്ചു. ഒരമ്മയെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കിയ നിന്നെ ഞാൻ ശപിക്കുന്നു. അരുതേ, അരുതേ നന്ദി, എന്നെ ശപിക്കരുതേ. ഒരമ്മയുടെ സ്നേഹം എന്തെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. ഇതാ നിന്റെ മോൻ, എടുത്തുകൊള്ളൂ. ഇതാ നിന്റെ മോൻ. അമ്മയുടെ ത്യാഗം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭാരതാംബ നമുക്ക് തന്ന സ്നേഹവും. ഈ സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്? സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും വഴിയെ നടന്ന് നമ്മുടെ ഭാരതാംബയെ അഭിമാനമുള്ളതാക്കാം. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you so much for that wonderful performance. It gave me goosebumps. Next, let's enjoy a dance performance choreographed by Vishnu Selvakumar. The participants are Vishnu Selvakumar, Tanushya Varadarajan, Jivika Kumar, Sangamitra Shankar, Dakshin Velmurugan, Afrin Satik, Jasniya Elangeshwaran. Let's welcome them. உயிரே உன்னை தமிழ் என்பதா, தமிழே உன்னை உயிர் என்பதா, இசையில் மெய் மறந்தாய், எழுத்தில் உயிர் மெய் கலந்தாய், குமரி கண்டம் முதலண்டம் வரை நீதான் இணைந்தாய். தமிழ் மகனே வாழா, அதிரடி காட்டு தாளமிட்டு ஆடு தெற்கு வடகிழக்கு நிலமிட வாழக்கும் வானம் நம் பல்லாகா நெய்த்தல மறந்திட அடிங்கள செண்டா காத்தல உருமிட கொட்டுங்க கொண்டா நெய்த்தல மறந்திட அடிங்கள செண்டா காத்தல முருமிட
Thank you, guys. I request all of you to please stay back till the end of the program because all our participants has put in a lot of effort for this. Next, let's have a Hindi Kannada group song, Echaragu Echaragu, narrating the passion of the freedom fighters, their unreasonable, unshakable, and unconditional love, passion, and commitment to free Bharata from British rule and save our culture. The performers are Suresh Bhatt, Supriya Bhatt, Jeevan, Sanjana, Raju Jayanna, Yogita Seema, Vivek Patil, Pradeep, Surya, Shaurya, Siddharth, and Arnav. Ladies and gentlemen, please. ದೇಶ ಮೆರೆದು ನಿಂತ ಶೌರ್ಯ ತಾಯ ಬಂದ ಬೆಳೆಸುವಂದು ತೋರಿದಂತ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಾಕು ದೇಶ ಮೆರೆದು ನಿಂತ ಶೌರ್ಯ ತಾಯ ಬಂದ ಬೆಳೆಸುವಂದು ತೋರಿದಂತ ಧೈರ್ಯ ಎಚ್ಚರಾಗು 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 ವೀರ ಭರತ ಮಾತೆ ಕರೆಯುತ್ತಿರಳು ಗುರುತ ಬಾರ ಎಚ್ಚರಾಗು 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 ವೀರ
ಕರೆಯುತ್ತಿಹಳು ಕೊಡುತ್ತ ಬಾರ ಎಚ್ಚರಾಗು 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 ವೀರ ಬೆಳಕು ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ ಎಂದು ಮಾನವರನ್ನು ನೀನು ಇನ್ನುಳಿರುವ ರಕ್ತ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ ಎಂದು ಮಾನವರನ್ನು ನೀನು ಇನ್ನುಳಿರುವ ರಕ್ತ ಹಿಂದೂ ಒರೆಸುಬಾರದಾಯ ಮಗದ ಕಣ್ಣೀರದಾರೆ ಸಾರುಗಳಿಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನಾಡ ಭಾಗ್ಯತಾರೆ ಎಚ್ಚರಾಗು 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 ವೀರ ಭರತ ಮಾತೆ ಕರೆಯುತ್ತಿರಳು ಕೊಡುತ್ತ ಬಾರ ಎಚ್ಚರಾಗು 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 ವೀರ ಭರತ ಮಾತೆ ಕರೆಯುತ್ತಿರಳು ಕೊಡುತ್ತ ಬಾರ ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದೇಶ ಮೆರೆದು ನಿಂತ ಶೌರ್ಯ ಕಾಯಬಂದ ಬಿಡಿಸುವಂದು ತೋರಿದಂತ ಧೈರ್ಯ ಎಚ್ಚರಾಗು ಶಾಸ್ತ್ರದೇಶ ಮೆರೆದು ನಿಂತ ಶೌರ್ಯ ಕಾಯಬಂದ ಬಿಡಿಸುವಂದು ತೋರಿದಂತ ಧೈರ್ಯ ಎಚ್ಚರಾಗು 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 ವೀರ ಎಚ್ಚರಾಗು 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 ವೀರ Thank you. Thank you. Thank you so much for that beautiful performance. Next, let's enjoy a patriotic medley song by Shri Amol Bhongale. Let's welcome him, please. Hello, hello, hello. ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी जान ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान तेरे दामन से जो आए उस हवा को है सलाम तेरे दामन से जो आए उस हवाओं को सलाम चूम लूं मैं उस जुबां को जिससे आए तेरा नाम सबसे प्यारी सुबह तेरी सबसे प्यारी तेरी शाम तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू तुझ पे मेरी जान हो अंबर है ता धरती बसदी हेते हर रत हसदी हो किन्ना सोना देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा
किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। हाँ ऐसा देश है मेरा। बोल पपीहा कोयल गाए हो, बोल पपीहा कोयल गाए, सावन घिर घिर आए, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा रहा ऐसा देश है मेरा। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ के रास्ते जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। वंदे मातरम। जहाँ वहाँ तारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दुनिया घूमा है, नहीं कोई तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे पास थी मुझको तड़पाती रुलाती थी। सबसे प्यारी तेरी सूरत एक ही प्यार है, प्यार है। मैं तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, इंडिया तुझे सलाम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you for that beautiful performance. Please, I request you all to stay back for the entire program. We have 2 more events here. They have all put in a lot of efforts. Next, we have a Tamil dance, choreographed and performed by Pavitra Padmanabhan. Please put your hands together for her. तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझ। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी
आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सारा जहां देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। अस्सी नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, कहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहां बस तेरी याद, बस तेरी याद जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही, माँ तुझे सलाम। Thank you for that beautiful performance. Last but not the least, let's have a Rajasthani patriotic dance by the Rajasthani ladies group. The participants are Nisha Rajpurohit, Deepika Sharma and Manju Rathor. Please welcome them. I request all the participants to stay back because we have a photo session after this. हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आज़माना। यारबाज हम, चालसाज हम, इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो।
जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी 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 Thank you so much for that beautiful performance. The Amrit Mahotsav of freedom is the nectar of the energy of freedom. That is, the nectar of inspiration of the freedom fighters. Hope you all truly enjoyed the short and sweet program based on Azadi Ka Amrit Mahotsav, 75 years of Indian independence. The next 25 years are deemed to be the Amrit Kal. Amrit means nectar. And let the nectar of new ideas, new resolutions, the nectar of self-reliance dominate the next 25 years of Amrit Kal. Ladies and gentlemen, it is worthwhile celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, 75 years of independence. But remember, this is hard-earned independence that shall not go in vain, as it is in our hands to preserve this Azadi for the posterity. As I, Malavika Durga Prasad, sign off, let me thank you all for this great opportunity to host this great event. Now may I welcome all the participants on stage along with Daivak, Akash Manoj and Diya for the national anthem. I request all of you to stand for the national anthem, please. Can we also have the participants on stage, please? All the participants who are here, please join us on stage. बिग आप सामने खड़े रहे जो जिनका हाइट ज्यादा है ना वो पीछे खड़े रहे ठीक है जस्ट स्प्रेड इट आउट कम दिस साइड विक्रम कम दिस साइड